so much, Miraj, Asif, Bhamla Foundation, and ladies and gentlemen. Every year I truly look forward to this day because the Bhamla Foundation does such a great job, fantastic initiatives here regarding environment. And today I have to say that we are living in very difficult times, and every day we read in the newspaper how we are destroying our environment. We don't realize how that's going to affect our children and our future. Today I have my children here with me for this reason itself, to make them realize how important environment is for them. We want to leave behind a nation, a world which we grow up in, and I think Asif remembers what Bandra used to be and what it is today. And we want to bring back that same glory to our environment. And I would appreciate that every citizen takes part in contributing towards a better environment for themselves and their children. So thank you so much, Asif, for having me here. And I would like to wish you the very best and more success every year. Thank you so much. Thank you, madam. A token of appreciation, a small sapling from the Bhamla Foundation. Thank you very much for all your support. All these years, PRBB has been very, very supportive to the foundation. All the best for the...
I've always been with Asif. What? I would like to congratulate him. Sapling? ये और आजकल मैं स्पीच नहीं देता हूँ, तो यही कह सकता हूँ कि किया हुआ काम और बोया हुआ बीज कभी धोखा नहीं देता। बहुत सी शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मे गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। गोविंदा जी थैंक यू। और इससे पहले मैं चाहूंगा बात से बामला जी एक छोटा सा भेंट, एक छोटा सा पौधा जो शायद आज के बाद जब आपके घर में या गार्डन में लगेगा तो ये संदेश देगा कि भामला फाउंडेशन और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम पर्यावरण के लिए अपने हृदय में कितना प्यार रखते हैं, उसका एक सिंबॉलिक आपको मोमेंटम भामला फाउंडेशन की तरफ से थैंक यू सो मच। और जोरदार तालियों से फिर से एक बार स्वागत कीजिए हम सबके बहुत ही लाडले गोविंदा जी। अब अगर गोविंदा जी स्टेज पर आए हैं और थैंक यू बोल के चले जाएंगे तो बांद्रा की जनता तो सर हम लोगों को एक धरा भी कुछ एक बजाइए गोविंदा जी के लिए, जैसे अपने मुंह से गुनगुनाए। ही इज अ वेरी गुड सिंगर। समथिंग फॉर मिस्टर गोविंदा टू रियली सेंड अ मैसेज दैट ही सपोर्ट्स द एनवायरनमेंट। चेक 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 हेलो हेलो। सर धरावी रॉक्स ये ऑर्गेनाइजेशन है। These are kids from the slums. They are rag pickers. So they were rag pickers. और इन्होंने ये जो अपना पूरा बैंड बनाया हुआ है वो got out of waste सर। तो जो कुछ भी डब्बा कचरा जो मिलता है उनसे ये बैंड बनाया है और ये आज हम हमारे सामने परफॉर्म करेंगे। ओके दिस इज स्पेशली फॉर गोविंदा जी फ्रॉम धरावी रॉक्स। सर माइक आपके हाथ में होना चाहिए। Okay, come on, let's go, Ravi rocks! Yeah, come on! समीर कदम जी से इंडिकेट कीजिए मंच पर आए। समीर कदम जी। Rhythm change, come on. Rhythm change, yes. Yeah. Darren works. ये जीता जाता रबर का टुकड़ा।
आंसर और काफी सारी
and it's just wonderful to see, you know, this part of Bandra. It's so full of people. ये stretch है जो Carter Road का promenade, यहाँ पे दिन में कम से कम एक बार या तो सुबह 7:30 बजे या शाम को 7:30 बजे मैं भागती हूँ और आज बहुत अच्छा लग रहा है that I always look and see that this is wonderful what's going on. As far as the environment is concerned, we will be giving a lot of messages today. I mean, thanks to Asif Bhamla ji, who's put up such a fabulous event. But I think that it shouldn't just be about today. You know, जिस दिन वो दिन होता है हम सब बहुत celebrate करते हैं. अगर Mother's Day होता है तो अपनी माँ की सब लोग photograph डाल देते हैं Instagram पे. अगर Environment Day होता है तो हम सब आके यहाँ पे message दे देते हैं. But I think it's very, very important that we forget about that one particular day and we just remember that, you know, we have to make sure that we do our little bit every day. There's no point of living in penthouses if they're full of smog, or having big wide roads if they're going to be drenched in water, or having big luxury cars if our children are really not going to have clean air to breathe. And that really isn't progress. Progress is what you do at home. Progress is what you're going to make out of it. And most importantly, I think that we have to do our little bit. And if that little bit is carpooling or not wasting plastic or recycling, reusing, whatever we do, आज घर जाके हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट के लिए. और अगर ये आप बोलेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो गलत है. That little bit starts at home. Do it for yourself, do it for the environment, do it for you know, your children, because this is all that we've got to leave for them. So that's my little message. I don't know how many of you are paying attention, but I've come here, I've done my bit, but I do my bit every day as well. Thank you. Thank you, Nihad, and everybody was listening to you. Thank you so much for being kind for the environment. Just the first, बाकी सारे लोग आपकी बातें सुन रहे थे. और हम जरूर पेड़ पौधे लगाएंगे, environment को promote करेंगे. Thank you so much for being here, and please keep coming to this event and promote the environment awareness cause. Thank you so much, madam. Thank you. We have a very beautiful green girl. गोविंदा जी आके चले गए और उन्होंने कहा आप बाद में आना. और किनसे कहा? Karishma Kapoor. Karishma Kapoor is here. Thank you so much and we welcome you. But they really mean it. They really talk about it. They go down the street. ये लोगों से अपील करते हैं कि प्लीज पानी की बोतल मत फेंको. प्लीज आपकी पूजा की सामग्री समंदर में मत फेंको. And they have successfully achieved that. The Chakachak Bandra, after its inception, the team organizes 2 major cleanliness drive in Bandra station adjoining Garib slums. The performance today is, however, not about the initiative but the challenge.
Hello guys. Firstly, I'd like to thank the Bhamla Foundation for always organizing and this wonderful event, which is the World Environment Day. Really reaching out to things that really matter at the end of the day, because we all are shareholders in this world, and which means that we all have to take care of our own space and our own environment. But these kids are doing something commendable. They are actually going out of their way. Even though they have school, they have exams, they have their work to do, projects to do, and they're going and cleaning up the city and creating this inertia, which I'm sure in today's time and age with social media is going to catch on like a fire. And I do want to, Asif Bhai, I do want to reach out to all the educationalists out here who are, principals of colleges and chairmen of certain educational institutions. I seriously feel that these kids need to get credits for all the hard work they're putting into the environment, so that it's not just we shouldn't just take this for granted what they're doing. I think there should be a system where they get some kind of marks, where they get some kind of credits that can go towards their graduation, because this work is as important as the work they're going to be doing in school and becoming really intelligent and working for the entire social cause and working for India and generating wealth. I think this is true wealth, and I really reach out to all you guys to think about this and give them credits for all the work that they're putting. Thank you very much. Thank you, Bandra, for being here. I think this is a wonderful initiative. Thank you, Asif Bhamla Foundation. Thank you, Zauji, but I need to wait on stage. Thank you, Team Sauchalaya. And before we go next, let me introduce the host of the evening, Cobra. Big round of applause for Cobra. Here I am, ladies and gentlemen.
Actually, I'm going to hold it myself. Good evening, everyone. It's so wonderful to see everyone out here in such large numbers to support such a good cause, which is saving our environment. I would like to thank Asif ji and the Bhamla Foundation to giving me this opportunity to come here and hear these inspiring stories on the stage of what a wonderful job
I think all the citizens are doing, and everyone our city is doing for us. I'd just like to say a little small thing, not take up much of your time, that I'm a Bandraite, and I love Bandra, and I love Mumbai. So just want to urge everyone out here that we should make even a small effort. I know we're all really busy in our lives, but small little things like going back and planting this tree, saving water, you know, putting the wet and dry garbage separate, just small things we should contribute to make our city and our environment a better place. Thank you so much. Have a lovely evening. Thank you, Karishma ji. बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आई. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, to add to the long list of eminent people out here, we have a very, very special person who is the Director of Communications for the UN here in India. And his name is Doug Segar. And may I please request Mr. Bhamla to kindly present a sapling to Doug. And Doug, while that is in progress, may I please request you to kindly say a few words. Good evening, everybody. It's so wonderful to be here. My name is Doug Segar. I'm the director of the Information Center of the United Nations based in Delhi. And it's such a wonderful moment to celebrate World Environment Day with all of you here in Mumbai. As you can see, the theme of this year's World Environment Day is connecting with nature. And here in Mumbai, the most prevalent, the most prominent piece of nature that you have, any guess, what is it? It's right there. It's a little bit dark, but of course it is the ocean, right next to you, covering 3/4 of our beautiful planet. And if anybody has any doubt of how important this piece of nature, our oceans, really are, just imagine taking a couple of breaths. Take 2 breaths. It's better than Delhi though. That's 2 beautiful pieces of breath. One of those 2 pieces of breath came straight from the ocean. 50% of all the oxygen that we breathe comes straight out of the ocean. That is really how important the oceans are for us. And it's so wonderful to be here in Mumbai. I joined Afro Shah, who you saw just now. I don't know if he's still around, at the beach cleaning just yesterday. Yeah, and it was fantastically inspiring to see thousands of volunteers coming out, all working together to clean up the beach from plastic. And it was a huge eye-opener for me to see not just how involved people can be and should be in cleaning their environment, but also to just see the sheer amount of garbage on the beach. Because normally you don't see that. You think the ocean looks the same every day, but it's all underneath, and it's only when it comes to the shore that you see in what difficult stage our oceans are. Right? We have 8 million tons of plastic being dumped in the oceans every year. That means 1 garbage truck of plastic every single minute. And if you think, oh, that doesn't sound like a lot, the oceans are big, it's just 1 garbage truck. Well, 1 a minute means 60 per hour, right? And means more than almost 1,500 a day. Garbage trucks of plastic dumped in the oceans, and it is destroying animal life. So I'm so inspired to see the initiative of Afro Shah. I'm also so inspired to see the efforts of organizations like the Bhamla Foundation, all the different authorities that are involved in these issues. Team Swashla also involved in garbage collection, in waste management, in recycling. All those things is absolutely key. And one small contribution that the United Nations is trying to make to all these efforts is that right now in New York, the first ever World Oceans Conference is starting. It's the entire week this week, and all the governments around the world are trying to come up with concrete actions, concrete plans to reduce the amount of plastic in the oceans and bring our oceans back to a healthy stage. So thank you so much for all of you being here.
please support these big global initiatives that are starting right now in New York, the World Ocean Conference, and please support all organizations and the authorities here in cleaning up this beautiful ocean that you have right here. Thank you so much. Thank you so much, Doug. Thank you very much. Hi, good evening. Hi, how are you? Ladies and gentlemen, before we move to our next segment of entertainment, I'm going to request Mr. Bhamla to kindly present a sapling to Neith. I'm also going to request you, sir, to kindly present a sapling to Tushar. Right here. Thank you. Thank you very, very much, sir. Thank you very much, Mr. Kapoor, for joining us today. Thank you. Neith, Mr. Kapoor, I'm going to request you both to kindly say a few words. And to Mr. Harish and his wife, Mr. Asif Bhamla. He will speak later because he's got to perform. Would just like to congratulate Mr. Bhamla for pursuing such a great endeavor, and it's very hard for us in our busy schedule maybe think about the environment and come for these kind of events every day, but in our own lives, in our own small way, I think we should definitely connect with nature. That's the theme this year, and I think it starts at home. So I'm trying to inculcate these values in my one-year-old from now on. It can start with the usage of plastic. The least we use plastic, the better it is for the environment. So that's what I apply where his toys are concerned. We try and recycle as much as possible. And of course, I think animals also are part of the environment. And in cities like Mumbai, there's almost like a stray dog epidemic. So I think the little that we can do from our side is try to sterilize as many stray dogs as possible. They also constitute the environment. They also add to garbage, add to a lot of, it's like it can become a menace, but rather than, you know, cruelly kill them, I think we should sterilize them so we have as fewer stray dogs in the future and the environment is cleaner, and that'll also add in its own way. Nobody talks about animals, I don't know why. But that's it. I think let's just educate our children, the future generation, to be as knowledgeable and as particular about the environment as much as possible. Save water, save electricity, save use as little plastic as possible, and just use your common sense, and the environment will come first. Yeah. Thank you. Use your common sense. As simple as that. Thank you. Thank you very, very much. Sachin Ahilji, the man who started this initiative of Bhamla Foundation. Honorable dignitary on the stage, मुझे आज भी याद है कि 7 साल पहले, when I was the Environment Ministry for State Government, we thought that these initiatives can't be taken it to the masses by just thinking and making decision in Mantralaya. So it has to go to the masses, and that's how we came with an initiative and a concept that with the help of the NGOs, we know we need to go to the people and create the awareness that how important is the environment. Absolutely plastic free, and I'm sure with each one of you attending this evening, we will make a small impact by ourselves towards the larger mission. Thank you everybody, thank you for being on stage. Chanki Pandey ji हमारे बीच हैं और इनके कुछ he'll speak. इनके विचार in the band, right? So people, he just will talk about environment. Chanki Pandey ji. ये मेरे को भी घुसने देना. Thank you very, very much. Mr. Pandey, would I request you to kindly say a few words? You're a Bandrite man. Good evening, all my friends from Bandra. कैसे हो भाई? All good? Come on, if you're from Bandra, then let me hear a cheer, man. Okay, but let me. That's the point. Okay, let me tell you something. When I was young, I used to think that these mangroves were actually mango trees. I'm joking. But when I grew up, I realized how important these mangroves are for our environment, for Bandra, how it protects our coastline, and how lucky and blessed we are that we live out here.
I think Bandra is the most beautiful suburb of India. So let's give it a big round for Bandra. You know, I was so happy when I heard about this Mr. Afroz cleaning all these beaches. I think we should also take an initiative, clean our seaside, clean all our streets, and plant lots of trees, and let's all be happy. Thank you. Thank you so very much. Thank you for joining us here this evening, Mr. Pandey. I'm going to request you to kindly take a seat. All right. And while you settle down, ladies and gentlemen, before we introduce our next performing act on stage, we have an AV. So let's hoga. कुछ ही लम्हे पहले यहाँ पे करिश्मा कपूर जी थी, तो उनकी चिट्टियाँ कलाइयाँ हो गई. मेरी यहाँ पे बड़ी-बड़ी हाई हील्स के लिए इनके पास एक गाना है. यहाँ पे कितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, एक बार थोड़ा चिल्ला दीजिए प्लीज. कोई खूबसूरत लड़की है यहाँ पे? Isn't it? तो आप सारी खूबसूरत लड़कियों के लिए भी इनके पास एक गाना है. करते नहीं, मेरी जान कुछ वर्ड्स बोलने का नहीं है. इनके कॉज के लिए हमेशा आते रहता हूँ, आते रहूंगा. अगर हारा नहीं तो कुछ नहीं, सबको मालूम है. बोलने की जरूरत नहीं, इतना भी तो किसको अक्कल नहीं, ऐसा तो नहीं ना. हारा नहीं तो कुछ नहीं बाबा, ये लोग आया मेरे पास हारा. थैंक यू. You know what, honestly, Meet were on stage, but the only song I know is Happy Birthday, so can we just go Happy Anniversary, because it's Jagu Dada's anniversary today. It's Happy Anniversary to you, Happy Environment Day to you. Thank you so much, Jagu Dada, for joining us today. I remember I was at an event with Mr. Shrav. I want to hear something from that. Yeah, of course. बोला ना. I was only giving a prologue. बहुत पुराना है, एक अभी वापिस से बोलता हूँ. कुछ लोग आए थे पेड़ काटने, कुछ लोग आए थे मेरे गांव में. पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में. धूप बहुत तेज है कहकर बैठ गए उसी के छाव में. समझ गया ना, समझ गया ना. पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में, धूप बहुत तेज है बोल के बैठ गए उसी की छाव में. तो अपने बच्चे लोगों के लिए संभालो झाड़पान, नहीं तो जल के मरेंगे, सड़ के मरेंगे. अपने को अपना नहीं, अपने बच्चों का सोचना पड़ेगा. समझा. ये करते रहता है भाई, मेरे हाथ में दिया हुआ है. इसका मतलब आज से नहीं, बहुत दिन से चल रहा है. और ये सब बच्चे लोग के बर्थडे पे लगाओ. हाँ भाई, बर्थडे पे लगाओ, अपने माँ के बर्थडे पे लगाओ, अपने बच्चों के बर्थडे पे लगाओ. बाकी गेम खेल लो, मगर इसको भूलो मत. समझ लो भाई. All the best, all my love to you and the foundation. Good luck, and I love your singing. You're beautiful. Can you hear a few words, my brother? Just for you. Bless you, darling. A hot baby doll coming up. Dena, bhai, dena.
गुड इवनिंग बांद्रा। मैं सबसे पहले तो मैं आसिफ बामला को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बांद्रा को नहीं बल्कि पूरे बॉम्बे को, पूरे हिंदुस्तान को ग्रीन करने का। मैं तो ये मानता हूं कि मुंबई में सबसे ज्यादा ग्रीन अभी तक मेरे ख्याल से बांद्रा ही है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट क्योंकि मैंने बचपन से जो चीज़ यहाँ देखी है वो आज भी बरकरार है और इनफैक्ट और बेटर हो रहा है, एंड आई थिंक दैट दिस शुड कंटिन्यू एंड वी आर ऑल फॉर दिस कॉज। एंड मैं आप लोग सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये कॉज को सीरियसली लें। जैसे कि जैकी दादा ने कहा कि बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, एक पौधा आप ज़रूर लगाएं और ग्रीन करें हमारे सिटी को, हिंदुस्तान को। सो दिस विल बी वंडरफुल फॉर एवरीवन। थैंक यू। Thank you so much, Armal ji. Thank you so much, Dilbar ji, Adil ji. Thank you for giving all your contribution to the foundation.
In fact, thank you so much Arbaz bhai, thank you so much Asif bhai, and it's a pleasure being here. और हम सब यूथ की आवाज़ बहुत ही खतरनाक होती है. लोग कहते हैं यूथ जो है वो ओपिनियन लीडर्स है कल के, लेकिन मुझे लगता है कि यूथ जो है वो आज के ओपिनियन लीडर्स हैं. आई थिंक हैप्पीनेस फॉर टुमारो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजडम ऑफ टुडे. जितना हम आज अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे उतना कल हमें फ़ायदा होगा. और जैसे मैंने बोला था, वहाँ स्क्रिप्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, हाई कुबरा, स्क्रिप्ट्स की बात कर रहा हूँ कि हमें जो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं एक्टर्स को, हम हार्ड कॉपी लेते हैं, बहुत पेपर वेस्ट होता है. हमें अपने आईपैड या टैबलेट से अपने स्मार्टफोन से पढ़ लेना चाहिए, ऐसे काफ़ी पेपर बचेगा. क्यों आवाज़ भाई? So thank you so much for inviting me here. Thank you, sir, and it's a pleasure being here. Thank you so much. I wish you're going to be performing in a bit. You're going to be performing in a bit. Yeah? How are you guys doing tonight? I'll just make it short and sweet. All I would say is it's high time we start respecting the nature, the environment, before it starts disrespecting us. All right, guys, lots of love. Thank you. Thank you so much, Vijay. Beautiful, wonderful, talented children for a very special occasion. अब एक क्षण के लिए मैं चुपचाप आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज इस मंच पे ये मेरा वादा है, वादा करो, ये वादा करो, कुछ करना है अब, ये वादा करो, अपने हाथों से इस धरती की ऐसी तबाही
होने न दो, वक्त है कल, इसे रोकेंगे हम, वादा करो। क्या हम वादा करेंगे? अच्छा, आप 3 लोग वादा करेंगे या कुछ वादा? बहुत अच्छी तरह से सुना मेरा गाना। सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत सारे लोग बहुत कुछ चीजें कह रहे हैं, थोड़ी सी रिदम हो जाए, थोड़ा सा उनको याद दिलाए हम कहाँ से आए हैं। नमस्कार, हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि इस इश्यू को टच करके भामला जी ने वो टॉपिक छेड़ा है जिसको छेड़ने से मैं ये कह सकता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वी ऑल नीड ए गुड एनवायरनमेंट। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पीना कोई मतलब नहीं है अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। सो मैं भामला जी की फाउंडेशन को, भामला फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इतने जोश से, इतनी लगन से, इतने प्यार से ये काम उन्होंने हाथ में लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जरूर कामयाब होंगे। जय महाराष्ट्र। अब मैं वैसे भी भाषण देने की बीमारी हमारे देश में आम है। लोग एक बार स्टेज पे आते हैं, माइक पकड़ लेते हैं और बोलते रहते हैं, चिपक जाते हैं माइक के साथ, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि बोलने वाला बोलता रहता है और सुनने वाला सोता रहता है। तो मैं आप लोगों को ज्यादा बोर न करते हुए, I think we got a very fabulous singer here. Let us hear him. Thank you. तो दोस्तों, अंकित तिवारी जी, तेरी गलिया, and सुन रहा है the man himself with a beautiful voice. और कुबरा आप अच्छा बोलो।
आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे इनिशिएटिव पे जो आसिफ भामला जी ने आज ही नहीं, मेरे ख्याल से हर साल करते हैं। एनवायरनमेंट डे है आज, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है, और मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, आपने शाम से यहाँ अलग अलग कार्यक्रम देखे होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि मैंने अभी इस ग्रुप को देखा, बहुत प्यार से वो परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया है, लेकिन आपके सूझबूझ, या जैसे उन्होंने कहा, थोड़ी अगर दिमाग की बत्ती जले तो हम ही हैं इस धरती के, हम ही हैं जो इस धरती का ख्याल रख सकते हैं, जो हमें दी गई है, जो प्रकृति ने आज हमें दिया है, उस उपहार को हमें संवारना है, सुधारना है, अपने आप को सुधारना है और आगे की पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी और जीवन हम ही समर्पित कर सकते हैं। तो आज से ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ा बर्ताव लाएं तो इस धरती के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, we heard Raveena ji speak, and there's a very, very important person who's not one, who's many people. And मैम ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे कोई भाषण सुनने नहीं आया, तो अपने अंदाज में वो
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए कुछ कह दीजिए। हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर संकेत भोसले। आपने कभी भूले भट के मुझे देखा होगा, टीवी पर नहीं, यहीं बैंड्रा में कहीं। तो आज सारे एक्टर्स यहाँ पे आ नहीं पाए ये डे सेलिब्रेट करने, तो मैं कुछ एक्टर्स, उन्होंने मुझे भेजा है कि गो एंड रिप्रेजेंट अस। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा हम सभी के फेवरेट यानी कि द बैंड्रा बॉय मिस्टर संजय दत्त। हेलो एवरीवन, आज की शाम कुछ ज्यादा ही खास है। खास मतलब कुछ पार्टी बीटी नहीं है। हाँ सर, खास यानी कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट मतलब नेचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट, हाँ वही नेचर। नेचर, हवा, पानी, वो जो तुम लोग दिन रात खराब कर रहे हो। अरे दाढ़ी कर रहा है, नल चालू है, क्या नाटक है? ब्रश मार रहा है तो इधर नल चालू है, क्या नाटक है? ग्लोबल वार्मिंग सुना है कि नहीं? उधर एंटार्क्टिका में बर्फ पिघल रहा है। बर्फ कितना जरूरी है मालूम है ना तुमको? ग्रेप जूस के लिए सर, ग्रेप जूस के लिए। मैडम प्लीज मेरे बर्फ का टॉपिक डिस्टर्ब मत करो आप। बर्फ बहुत जरूरी है, पानी बनता है उससे, और लगता भी अपने को। जोरदार ताली हो जाए बर्फ के लिए। जोरदार। कल को मेरा एक दोस्त, इधर दोस्त नहीं है मतलब ऐसा ही जान पहचान का, रवीना। हाय रवीना, हाउ आर यू डूइंग? लॉन्ग टाइम नो सी। कल को मेरा दोस्त इधर ही रात को 3 बजे हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, उतर के गया। मैं बोला क्या करके आया रे? बोला जाके आया जरा। मैं बोला रोड पे? बोलता हाँ। बोलता विद्या बालन बोल रहे जहां पे सोच वहां पे शौचालय। मैं बोला अबे गोचू, ऐसा नहीं है कि सोच लिया कि यहाँ पे शौचालय और कर दिया, ऐसा नहीं है। वो अलग सोच है, अपनी सोच बदलो। बोलो हाँ। वैसे बाबा वो आपका फ्रेंड वो 3 नाम वाला था क्या? नील नितिन नितेश। कौन सा? नील नितिन नितेश गो। नील नितिन मुकेश। नील नितिन, ज्यादा समझ में आता है तो आप ही बोलो। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आई एम अ बैंड्रा बॉय। आई लव माई बैंड्रा। आई लव महाराष्ट्र। आई लव इंडिया। आई लव अर्थ। तो ध्यान रखिए अपना खुद का भी और नेचर का भी। थैंक यू। और कौन आया है हमारे साथ? डॉक्टर संकेत भोसले या और कौन आया है सर? हाँ, हम सलमान सर के पास आ रहे हैं। हम पहले फरहान आ रहे हैं यहाँ पे। फरहान अख्तर यहाँ पर आ नहीं पाए सर, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा एक मैसेज दे देना मेरी तरफ से। मैं उनका मैसेज लेकर आया हूँ कि हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? इज गोइंग गुड। हाय रवीना। You are going to be said hi by like many characters tonight. Yeah. मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेव वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, एंड एवरीथिंग कम्स इन पैकेट्स एंड इट्स अ गिफ्ट बाय गॉड, सो ऑलवेज यूज इट। उसके लिए गाना डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। माफ कीजिए, गला थोड़ा खराब है आज। इट्स डेडिकेटेड टू एनवायरनमेंट, मदर नेचर। अंकित भाई आपके लिए भी। तो गाना ऐसा है, तुम हो तो गाता है दिल, गाता है तुम नहीं। इट्स टू एनवायरनमेंट। तो क्या है यहाँ, तुम हो तो कौन तो है हासिल, है हासिल तुम नहीं। तो क्या है यहाँ, सपनों के जैसे। एंड सलमान खान। सलमान सर के पास आ रहे हैं। उसके पहले रणबीर कपूर। सलमान खान। सलमान सर खान। सलमान सर। We are standing in Bandra, madam. I will get thrown into the ocean. And I really love him. And
रणबीर कपूर हो गया, सलमान सर आ रहे हैं तो मैं निकल लेता हूँ। एसके हाउ कैन यू लीव रवीना जी? अरे हमें आगे में थोड़ा सा देख लीजिए, आप तो सटक गए यहाँ से। मैं बोलना चाहता हूँ कि सर, आसिफ सर की बहुत बहुत तारीफ सुनी हमने। हर साल वो ये एनवायरनमेंट डे करते हैं, यहाँ पे सबको बुला के सेलिब्रेट करते हैं। मुझे यकीन है कि ये धरती को बचाने के लिए काम आएगा, और मुझे यकीन है, क्योंकि यकीन एक ट्यूबलाइट की तरह होता है, जलता है, देर से जलता है। देखने में बोलिए ट्यूबलाइट इज ईद पे। थैंक यू सो मच। Thank you Raveena ji, thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, बहुत सारे सितारे थे, मगर इनके पीछे भी कुछ सितारे हैं जो पोगो के फैमिली से आए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां।